नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सागरपुर थाने की पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। कमल पार्क मर्डर केस में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको याद होगा, अभी 4 दिन पहले हमने आपको सागरपुर के कमल पार्क की एक खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि सागरपुर के कमल पार्क में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें 2 नाबालिग लड़कों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। इस हमले के बाद अजय नाम के लड़के की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि लकी नाम का लड़का बुरी तरह से घायल हो गया था। पूरी वारदात के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए सागरपुर के एसएचओ दिनेश कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें हेड कांस्टेबल सानवरमल, पीएसआई पुष्पेंद्र, सिटी अनिल, सिटी शुभम शामिल थे, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से तमाम सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और महज 5 दिनों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों में 2 बालिग हैं और एक 17 साल का नाबालिग है। बड़ी बात यह है कि अजय पर हमला करने वाला, चॉपर से हमला करने वाला नाबालिग ही था। मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों को सागरपुर से गिरफ्तार किया गया है। जो 2 एडल्ट्स हैं, उनमें से एक का नाम संतोष है और दूसरे का शिवम है। ये दोनों पालम सादनगर के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके चलते 14 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 103(1), 109(1), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरी घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए। ये ऐसे वीडियो हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए हम इंडिया टाइम 24 न्यूज पर वो वीडियो प्ले नहीं कर सकते। तो बड़ी बात यह है कि सागरपुर थाने की पुलिस ने महज 5 दिनों के अंदर इन आरोपियों को धर दबोचा। जब ये पूरा मामला सामने आया था तो सबसे पहले इंडिया टाइम 24 न्यूज मौका वारदात पर पहुंचा था। अलग अलग बातें की जा रही थी कि स्कूल के लड़के हैं, लड़की का मामला है, लेकिन अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ चल रही है, तफ्तीश चल रही है। लड़ाई की असली वजह क्या थी, क्या पूरा मामला था, ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल आपको बताते चलें कि सागरपुर के क्षेत्र के लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में नशाबाजी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस से गुजारिश है कि इस पर भी ध्यान दे। अब लेंगे छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। The Congress leadership, even to this day, prioritizes over and above everybody else, every other group, every other backward class in the country, the interests of the Muslim minority. Time and again, courts in this country, multiple high courts and the Supreme Court, time and again has said that granting reservations solely on the basis of religion is unconstitutional and is not permitted. Being fully aware of this legal position, the Siddaramaiah government, in a very calculated move to appease and send a message to its vote bank, has indulged in this constitutional misadventure. And this is being done at the behest, direction, patronage of the Congress party's topmost leadership, most particularly Rahul Gandhi. Before the commencement of the Lok Sabha election campaign, Rahul Gandhi went about the whole country speaking the same strain of thought that earlier Prime Minister Manmohan Singh had spoken about, that the minorities of the country have an exclusive and first right over the country's resources. This is the same strain of thought of Rahul Gandhi reflected in the Karnataka budget, when Rahul Gandhi says, "Jitna hak, utni abadi," or the corollary to that, "Jitna abadi, utna hak."
The questions that the Bharatiya Janata Party would like to ask Siddaramaiah are these. You claim to be a practitioner of secularism. Is this the brand of secularism that the Constitution of India and Baba Sahib Ambedkar envisaged for the country, where benefits of reservations are taken away from SC/STs and given over to minority Muslims? You claim to be a champion, a self-proclaimed champion of Ambedkar and the welfare of backward classes. When the idea of reservations for minorities on the basis of religion was mooted during the framing of the Constitution, Baba Sahib Ambedkar had opposed this idea tooth and nail with these words. In 1949, while discussing this very idea, Ambedkar had said on the floor of the Constituent Assembly that the reservation of seats for religious minorities on the basis of religion is a fatal dose for the country. To divide a country on the basis of religion is dangerous and does not augur well for national unity and integrity. Reservations are meant to safeguard the interests of communities that have been historically subjected to discrimination and social injustice. Religion cannot be the basis of backward classes. If separate electorates and communal representation on the basis of religious identities were so vital, why then were they not claimed by Muslims when the Minto-Morley reforms or the Montague-Chelford reforms were on the anvil? The principle of reservation should be confined to minority communities that have been systematically discriminated against. Reservations on a purely religious basis would lead to the balkanization of India. This is how strong the opposition to religion-based reservations was even at the time of Dr. Baba Sahib Ambedkar. On one hand, the Congress party claims to be champions of backward classes, self-appointed custodians of rights of SCs and STs, claims to be the protectors of Dr. Baba Sahib's legacy, but in reality, this is the nature of politics that they pursue. Even earlier in 2004, the Congress government in Andhra Pradesh had proposed this 4% reservation in government tenders for Muslims. It was quashed by the Andhra High Court. The matter is now pending before the Supreme Court, before a constitutional bench. A similar misadventure by West Bengal High Court was also quashed by the West Bengal High Court. Even that matter is pending before the Supreme Court. This patently unconstitutional, prima facie illegal act will be challenged in the court. The Bharatiya Janata Party will fight against this move inside of the assembly and outside of this assembly on the streets. We will raise this issue in the parliament. We will also protest against this outside of the parliament. We will fight and oppose this inside the courtrooms. We will take this fight to the people in the state of Karnataka. And until and unless this unconstitutional move will be rolled back, the Bharatiya Janata Party's fight will continue. This action is not only illegal and unconstitutional, but also, quoting the words of the great Baba Sahib Ambedkar, has the potential to balkanize India. It is a threat to the national integrity, unity, and sovereignty. Even in the budget, the Siddaramaiah government has made separate provisions for minority specific schemes, which again are unconstitutional. While 150 crores has been allotted for protection of Waqf properties,
not a single word has been said about the illegally encroached Waqf properties in Karnataka. Even though thousands of farmers in Karnataka have gone to the streets over months protesting against illegal encroachment by Waqf properties. इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।